हेलो गाइस, आई एम साक्षी एंड आज हम करने वाले हैं इस ब्यूटीफुल रेड साड़ी पे मेकअप लुक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सबसे पहले लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। उसके बाद प्राइमर। तो अब मेरा प्राइमर लग गया। उसके बाद है फाउंडेशन की बारी। तो अब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। तो मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। और लूँगी फाउंडेशन। टैप टैप करके मैंने पूरे फेस पे फाउंडेशन को लगा लिया है अच्छे से। मेरा फाउंडेशन लग चुका है। उसके बाद मैं कंसीलर लगाऊंगी मेरी आईज पे। ऐसे ब्लेंड करती हूँ। तो कंसीलर को अच्छे से लगा लिया है मैंने। थोड़ा सा जहाँ पे डार्कनेस होती है, जैसे कि लाइक यहाँ 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 एंड यहाँ, एंड मुझे फोरहेड पे भी है, मैं यहाँ भी लगा लूँगी। कंसीलर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। नाउ अब हम आईब्रो को शेप करेंगे। सो मैं आईब्रो शेप कर लेती हूँ गाइस।
पहले मैं इसको कॉम्ब कर लेती हूँ। डिफरेंस देखिए दोनों आईब्रोज में कितना आ गया। लाइक मैं दूसरी कर लेती हूँ, वेट कीजिए। मेरी दोनों आईब्रोज सेट हो चुकी हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हैं। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं कंटूर करूँगी मेरे फेस को। सो कंटूरिंग के लिए मैं ब्रश ले लेती हूँ। Okay, and jawline. नोज कंटूर करूँगी मैं मेरी। अंदर की तरफ ब्लैंड। नोज में ब्रश, छोटी ब्रश से कंटूर करूँ। ओके, नाउ मेरी नोज भी कंटूर हो गई। मैं पाउडर कर लेती हूँ फेस को। जो मेकअप किया उसको सेट, बेस को सेट करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, अब ध्यान रखें कि आप आईज के नीचे आप बेकिंग भी कर सकते हैं एंड पाउडरिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा आप ग्लिटरी आई शेडोज लगाएंगे तो आपको नीचे बेकिंग कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपका जो नीचे नहीं फैलेगा प्रोडक्ट और अच्छे से लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा हो गया है पाउडरिंग। ओके, सो अब आ रही है आई शेडो की। अब हम आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मैं ट्रांजिशन शेड लूँगी एंड अपने आई के ऊपर प्लेस करूँगी। डिफरेंस देख लीजिए आप। मैंने ब्राउन कलर पिक किया है, डार्क ब्राउन। ओके, दूसरी आईज पे लगाऊंगी। ओके, दोनों आईज पे लग गया। ब्राउन के बाद मैं एक पर्पल, लाइट पर्पल कलर का शेड पिक करने वाली हूँ। लाइक बहुत लाइट है। उसको मैं मेरी क्रीज लाइन पे ब्लेंड करने वाली हूँ।
मैं थोड़ा कैमरे को पास कर देती हूँ तो आपको दिखेगा अच्छे से। तो लाइट पर्पल शेड के बाद मैं लगाऊंगी पिंक कलर, ये पिंक। इसको मैं मेरी क्रीज लाइन से नीचे नीचे लगाऊंगी, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसी शेड को मैं मेरे आईज के नीचे भी लगाऊंगी। So guys, this is looking awesome. थोड़ा सा इसको ब्लेंड आउट कर दूँगी ब्लडी से। इट्स ओके। ओके, नाउ यू लुक, आप देख सकते हैं। अब मैं इस पर ग्लिटर शेड अप्लाई करने वाली हूँ, लाइक दिस। ग्लिटर शेड अप्लाई करने के बाद में क्या करूँगी, मैं दो कोई भी जैसे कि ब्राउन एंड कोई भी और डार्क कलर लाइक ब्राउन और डार्क पिंक को लेकर यहाँ इसके साथ ग्लिटर्स के साथ जॉइन करूँगी। Looking awesome. मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आईलाइनर लगाऊंगी। आज मैंने विंग लाइनर लगाया है। आईलाइनर के बाद मैं लगाऊंगी मस्कारा। पहले मैं मेरी आईज कर्लर से आईलैश को कर्ल करूंगी। मैं आईलाइनर लगाऊंगी, मस्कारा।
डिफरेंस। ओके, आप डिफरेंस देख रहे हैं मेरे आई में, आई लैश में। नीचे भी लगाऊंगी। नाउ मैं काजल लगा रही हूँ। मैं इसको स्मर्ज करूँगी। ऑसम। नाउ अब टर्न है लिपस्टिक का। तो आप ब्राउन कलर भी लगा सकते हैं एंड पिंक कलर भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का कलर है, पिंक। मेरी साड़ी से मैच हो रहा है, बट मैं आज ब्राउन कलर लगाऊंगी, माय फेवरेट। ब्लश लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं मेरे लुक को कंप्लीट करूँगी बिंदी के साथ। तो मैं अभी आपको मेरा फाइनल लुक। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप बालों को ऐसे भी रख सकते हैं, खोल भी सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने आज कर्ल किए हुए हैं बाल। सो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।